Hello and welcome to Unacademy, and this is our channel, Unacademy Cat. Very good morning to all the learners of Unacademy, and welcome you all to a brand new session of the Hindu editorial analysis session guide. It is a fresh start to the week. आज Monday है, and this is the last week for the month of September. And today, like every day, we are going to analyze one editorial, guys. आज का editorial काफी interesting है. We have not really discussed on this topic before. हमने कभी भी इस टॉपिक के ऊपर पहले बात नहीं की है. So hopefully you guys will enjoy discussing this topic. There are some really good and new words that we are going to study in this editorial. Also मैंने कुछ questions भी आपके लिए frame किए हैं on the basis of vocabulary. तो I hope आप लोग उसे भी आज attempt करेंगे. तो चलिए guys इस session को शुरू करते हैं. Hi Sumant, good morning and welcome to this session. So all the people who are going to be here for the very first time, I am Advocate Rushikesh Kate, and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam that goes for ZAT, IFT, CMAT, and particularly TISS. So this is the channel guys जहाँ पर मैं रोज दो टाइम लाइव आऊंगा. वन इज 11 AM जहाँ पर हम लोग हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन करते हैं, और आज से हम लोग टिस्नेट 2022 के लिए डायनामिक जीके टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं. एंड टुडेज टॉपिक फॉर द टेस्ट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन. तो होपफुली आई विल गेट टू सी यू इन द इवनिंग सेशन आल्सो टुडे एट 7 PM on this very channel for the dynamic test series for टिस्नेट 2022. Okay, hi Sayantika, good morning, welcome to this session. So guys, there are two types of subscriptions available with you from Unacademy. One is the Plus, जिसमें आपको live classes, weekly test, study material, unlimited access and structured courses मिलते हैं. Whereas in Iconic आपको Plus के तो सारे benefits मिल जाते हैं, but at the same time you also get personal guidance, study planner, one-on-one live mentoring, personalized test analysis, and expert guidance for any examination that you are aspiring for. So what are you waiting for, guys? Go for the subscription. 1 year subscription plan for the Plus. There are multiple subscription plan available, guys, with Unacademy. The 1 year subscription plan for Iconic goes for 39,500, and the 2 years, all the people preparing for CAT 2022, you guys should go for the 2 year subscription plan that goes for 59,999 for Iconic. And guys, do not forget to use my educator code, that is RUSHI. That will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. Also guys, 3 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं from 29th of September फॉर कैच एंड ओमेट्स. तो जल्दी से जल्दी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को सब्सक्राइब करो यूजिंग माय एजुकेटर कोड. एनरोल टू दिस क्लासेस एंड एनहांस योर लर्निंग ओनली विथ एन अकेडमी. ओके, हाय श्रुति, गुड मॉर्निंग. सितंबर मंथ के रहेंगे, सितंबर मंथ के नहीं, अगस्त मंथ के रहेंगे. वी हैव सितंबर मंथ का, अगस्त मंथ का हमारा पेंडिंग है. सितंबर मंथ वी विल डू इट इन स्पेशल क्लासेस. ओके, स्पेशल क्लासेस के इसमें हम लोग सितंबर मंथ के कवर करेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, उसे अगले हफ्ते से हम लोग शुरू कर रहे हैं. हाय आशा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस सेशन. हेलो मयंक, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो. हाय अद्रिका, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन. ओके, सो गाइज आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स अबाउट द लॉ, एंड इसका टाइटल अगर हम लोग देखते हैं, needless row. Okay, needless row is particularly it is reflects the controversy. Okay, हम we all know row is something which is standing in a straight line. Okay, एक के बाद जब हम straight line में रुकते हैं या फिर किसी एक चीज को arrange करते हैं उसे row कहते हैं. But here the meaning of this word means a controversy. एक row, there is a spat between two people, there is a controversy between two entities, so that is also that also means row. So यहाँ पर अगर टाइटल हम लोग देखते हैं, it clearly says that needless row मतलब एक कंट्रोवर्सी है, एक इशू है which is absolutely not needed. Okay, कोई भी उसको कुछ जरूरत नहीं है उस कंट्रोवर्सी को unnecessarily और ज्यादा उसका इशू बनाने के लिए. So this is what the title of this editorial says. Okay, अब हम लोग देखते हैं कि what is this headline. Okay, इसका headline क्या है. Now Rajasthan's law. Okay, Rajasthan law. So ultimately this has become very clear. Okay, यहाँ पर clear हो गया है कि this editorial is going to be about a law which is now made in Rajasthan. However, ये कौन सा law है, किस चीज के related law है,
अभी तक हमें समझ में नहीं आता है। ओके, राजस्थान लॉ डज नॉट वैलिडेट चाइल्ड मैरिजेस। ओके, डज नॉट वैलिडेट चाइल्ड मैरिजेस, मतलब ये जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी अभी यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाता है कि ये कंट्रोवर्सी जो है, whatever we are going to discuss in this editorial is going to be about child marriages. ओके, ये चाइल्ड मैरिजेस के रिलेटेड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हाउएवर राजस्थान का लॉ डज नॉट वैलिडेट चाइल्ड मैरिजेस बट हेल्प्स द राइट्स ऑफ अंडर एज ब्राइड्स। ओके, सो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इट इज रिगार्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज की जो नया अमेंडमेंट है राजस्थान के लॉ में, अल्टीमेटली डज नॉट validates the child marriages. Validate का मतलब होता है approval. It does not approves of child marriages. Instead, okay, instead it helps the rights of underage brides. Okay, underage brides के rights को वो help करता है. Hi Aman, good morning. Welcome to this class. Hello Anand. Good morning to you also and welcome to this session. Now let us have a look, guys. Okay, अभी editorial को समझते हैं. What is this editorial? Now the controversy over the recent amendment of the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, okay, 2009 में इस एक्ट को राजस्थान ने इंट्रोड्यूस किया था कि नो मैटर हाउ मेनी मैरिजेस हैपन इन राजस्थान, जितने भी मैरिजेस होते हैं उनको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ कंट्रोवर्सी दैट इज सराउंडिंग दिस एक्ट, जिसका अमेंडमेंट हुआ है, रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, उसके रिलेटेड, उसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी है दैट नाउ विच ब्रिंग्स मी टू वन क्वेश्चन गाइज। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट, ओके, ये राजस्थान का एक्ट है और देर आर वेरियस मैरिज रिलेटेड एक्ट ऑल्सो, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, ओके, ऐसे अलग अलग पार्लियामेंट्री एक्ट्स है। Now marriage is basically a personal law. Okay, ये एक personal law है, but it's also a part of secular law when the parliament made a separate law for it. Okay, special marriages act है, hindu marriages act है 1944 1955। तो मेरा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मैरिज इज व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट गाइस? शेड्यूल 7 में मैरिज इज व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट? इज इट अ स्टेट सब्जेक्ट, इज इट अ यूनियन सब्जेक्ट, या फिर इज इट अ कंकरेंट सब्जेक्ट? आप लोग मुझे बताओ। हाय साई, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस सेशन। Mr. Martin, good morning, welcome to the session. Come on guys, marriage is what kind of subject? Is it a state subject, is it a union subject, or is it a concurrent subject? इजी है, मैंने पॉलिटी में बताया है आप लोगों को, मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ाते वक्त ये पढ़ाया है आप लोगों को, सो इट्स वेरी इजी। जल्दी बोलो, सैंतिका, श्रुति, मयांक। अगर नहीं पता है तो राइट डाउन डीके इन द कमेंट सेक्शन। करण ने कहा इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू आंसर दिस? मैरिज इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट या कंकरेंट सब्जेक्ट? श्रुति ने कहा कंकरेंट सब्जेक्ट। सैंतिका, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? मैरिज इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट या फिर कंकरेंट सब्जेक्ट? यस, ऑफ कोर्स, मैरिज इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने अभी आप लोगों को एक लॉ, अभी एक हिंट दिया कि राजस्थान में भी उसके रिलेटेड लॉ है, मतलब अलग अलग स्टेट्स के मैरिज रिलेटेड लॉज है, और पार्लियामेंट में ने भी उसके ऊपर लॉज बनाया है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। ओके गाइस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके टिस्नेट के पर्सनल इंटरव्यू के लिए और एक्सटेम्पोर के लिए भी। देयर आर हाई चांसेस दैट दिस विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू या फिर इसमें भी। ओके, तो प्लीज इसको अच्छे से आप लोग करना, एक्सटेम्पोर में भी ये पूछा जा सकता है। बिकॉज ओके, नाउ एवरी स्टेट, ओके, हर एक स्टेट का अलग अलग मैरिज रिलेटेड लॉ है, बिकॉज हर एक स्टेट में ट्रेडिशन जो है, वेज जो है मैरिज के, वो अलग अलग होते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन,
दीज आर ऑल व्हाट पर्सनल लॉज, ये सारे पर्सनल लॉज हैं। और सेक्युलर लॉज भी है, देर आर every Indian or every citizen of this country is administered by two set of laws. One is the personal law, which he follows of his religion, and another one is the secular law. Okay, so there are so much diversities, इतने diversities है अलग अलग communities में, अलग अलग religions में. So there has time and again there has always been a push for implementation of uniform civil code, ताकि सब लोगों का जो administration हो वो अंडर एक कोडिफाइड लॉ के अंदर ही हो, एंड दैट शुड बी डन अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड. ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही वो किया जा सकता है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द आर्टिकल नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल नंबर क्या है, कोई बता सकता है? हाय सोहिनी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन. एनीबडी गाइस, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द आर्टिकल नंबर फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? Anybody guys, come on. It's easy, it's easy. Very good, Hiteshi. Absolutely correct. Article number 44, Part 4 of the Constitution, that is DPSP, Directive Principles of State Policies. Article number 44 gives provisions related to Uniform Civil Code, which is inspired from the Western Liberal Principles. Okay, Western Liberal Principles से हमने इसे adopt किया है. Correct, Sayantika and Sohini, correct answer. So the controversy, guys, okay, ये जो controversy है, which is surrounding this Rajasthan compulsory registration of marriage act, is absolutely unnecessary. This is what the editor thinks. As now, why he thinks it is unnecessary? As it clearly does not amount to validating, okay, validating or legitimizing. Legitimizing का मतलब होता है to make it legitimate या particularly make it legal, or it's universally approved, is the meaning of the word legitimizing. Okay, so it clearly states, why does the editor thinks that the Rajasthan compulsory registration of marriages act का जो पूरा controversy है वो necessary है? Because the amendment clearly does not amounts to validating or legitimizing child marriages. However, the issue, okay, however, the issue made by the opposition and the National Commission of Protection of Child Rights may occasion a reconsideration of the legal framework dealing with child marriages that continue to take place despite a statutory prohibition. Okay, ये एक्ट में तो कोई, ये अमेंडमेंट में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं नजर आता है, but the issues which are proposed by the opposition and the National Commission for Protection of Child Rights, this might give a rise for reconsideration of the entire legal framework. Okay, child rights, protection of child rights related जितना भी legal framework है हमारे देश में, that probably can be reconsidered, or that might be made to reconsider, because even though there is statutory prohibition, even though law में child marriage is an offense, okay, भले ही law में child marriage is a punishable offense, फिर भी आज भी in the modern times of India, we still in some of the places of India we see कि child marriages अभी भी हो रहे हैं. So only because of this possibility, that even though there is a statutory prohibition towards child marriages, फिर भी वो हो रहे हैं. So that might be considered for the entire reconsideration of legal framework which are dealing with child marriages. Okay, the Rajasthan law, okay, तो Rajasthan law मतलब कौन सा? The Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, which was first enacted in the year 2009. Okay, सबसे पहली बार वो कब इनेक्ट किया गया था? 2009 में इनेक्ट किया गया था, and it was amended recently. Hi Vaibhavi, good morning, welcome to this session. So it was amended recently, provided किस चीज के लिए वो एक्ट बना था? It was provided for compulsory registration of all marriages. जितने भी marriages होते हैं राजस्थान में, that need to be compulsorily registration. Okay, compulsorily उसे registration करना ही होगा. It is largely similar to the enactment in other state. Okay, ये बाकी के states के भी अपने
मैरिज रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉज है एंड एवरीबडीज रजिस्ट्रेशन लॉज जो है मैरिज रिलेटेड रजिस्ट्रेशन जो है वो सेम ही होंगे because all these laws are based on one of the landmark case of the Supreme Court. Okay, Supreme Court में एक landmark case हुआ था 2007 में, that was the Seema versus Ashwini Kumar. Okay, Seema versus Ashwini Kumar में Supreme Court ने एक principle को lay out किया था and it directed every authority, जितने भी registrar authorities है उन सारे registrar authorities को Supreme Court ने direct किया था कि ऑल द मैरिजेस इन इंडिया, ओके, जितने भी मैरिजेस होंगे इंडिया में दे शुड बी रजिस्टर्ड. इस केस को याद रखना गाइस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन. ओके, दिस इज अ लैंडमार्क केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है ये, दैट इज द सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2007. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल रूल आउट किया था that जितने भी marriages होंगे all the marriages that happen in India should be registered. सारे के सारे वो registered होने चाहिए. The original law itself, okay, the original law itself did not exclude registration of child marriages. Okay, तो original law जो है मतलब all the law that are present in the country, all the original laws does not exclude registration of child marriages, and all that the amendment does is to change the age, okay, change the age at which the obligation of registered shifts from the parents or guardians to the parties to the marriage. Okay, मतलब ये जो राजस्थान का जो ओरिजिनल लॉ है ऑफ राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट, उस ओरिजिनल एक्ट में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि चाइल्ड मैरिजेस को वो एक्सक्लूड कर देंगे. ओके, दे विल एक्सक्लूड चाइल्ड मैरिजेस. इट्स नॉट लाइक दैट. रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक डिसीजन दिया था कि मैरिज रिलेटेड एक डिसीजन दिया था कि द चॉइस ऑफ पार्टनर इज नाउ अ फंडामेंटल राइट. ओके, आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चूज कर सकते हो एंड दैट is made a fundamental right now under article number 21 of the constitution, that is right to life and personal liberty. Okay, तो ओरिजिनल लॉ जो है that does not validates or legitimizes या फिर it overall does not excludes the registration of child marriages, but इसका अमेंडमेंट क्या है, व्हाट इज द अमेंडमेंट टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, इसमें एक हल्का सा चेंज किया गया है. व्हाट, द चेंज ऑफ द एज इन विच द ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर. मतलब क्या है कि ऑल द मैरिजेस दैट हैपन इन राजस्थान दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, बट इसका ऑब्लिगेशन चेंज हो जाता है. इट वाज फ्रॉम पेरेंट्स. ओके, पहले कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट टू रजिस्टर द मैरिज, पेरेंट हो या फिर गार्डियन हो, बट नाउ इट हैज शिफ्टेड टू द parties. Okay, it has shifted to the parties to the marriage. Parties to the marriage मतलब क्या, now marriage is a contract. Okay, marriage is basically a contract, एक social contract है वो, which is done between two parties. अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल्स होते हैं वैसे मैरिजेस की भी एसेंशियल्स होते हैं. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिजेस आर गिवन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑल्सो. तो अल्टीमेटली द ऑब्लिगेशन जो है वो शिफ्ट हो जाता है. Who are the parties to the marriage? Okay, मैरिज में पार्टी कौन है, there is a groom, there is a bride. Okay, these two are the parties to the crime. तो ये हल्का सा अमेंडमेंट क्या है, what is this amendment? This amendment is that कि ये सिर्फ एज को चेंज कर देता है. It only changes the age of from the guardian to the parties to the marriage. Okay, like I said earlier, it was the duty. Okay, earlier it was the duty of the parties to the marriage to submit a memoranda on their marriage to the registrar if they were above 21 years, and if younger it was the duty of the parents or guardians. Okay, मतलब एक लिमिट, एज लिमिट ऑलरेडी डिसाइडेड है. The groom has to be 21 years and the bride has to be 18 years while they are getting married. तो पहले कैसा था, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज. अगर वो 21 साल के ऊपर है एंड अगर उनका शादी हो रहा है तो फिर अल्टीमेटली दे हैड टू सबमिट अ मेमोरेंडा
of their marriage, and if they are younger, अगर उससे वो छोटे एज के हैं, they had to do they had to do it on uh, the parents had to do it, not they had to do it on behalf the parents or the guardian जो भी उनकी शादी में थे, या whoever has fixed the marriage, they had to submit a memoranda of their marriage to the registrar office. Okay, the amendment, okay, the amendment changes this age limit of 21 for men, okay, 21 for men and 18 for women. मतलब जो legal age है, पहले कैसे था, universal 21 years of age था. So even though the bride is of 19 years of age while getting married, which is a legal age, and the boy is of 21 years of age while marrying, which is of legal age, फिर भी the parents or the guardian had to do, because the bride was not of 21 years of age according to the law. लॉ के हिसाब से क्या कहा है कि 21 साल से कम अगर है तो फिर द पेरेंट्स और द गार्डियन हैड टू डू इट. बट ये अमेंडमेंट क्या है, व्हाट इज दिस न्यू अमेंडमेंट दैट इज ब्रॉट, अभी वो जो एक छोटा सा प्रॉब्लम था उसे फिक्स कर दिया है कि 21 years of age and 21 years of age for men and 18 years for women. Okay, so this problem is now fixed. यही एक amendment है. This is what the amendment which was done to the original law of Rajasthan, that is Rajasthan Compulsory Registration of the Marriage Act. Okay, it is difficult, okay, it is difficult to see this change authorizing the bride, okay, it is difficult to see this change authorizing the bride herself to participate in the marriage registration after the age of 18 as one that permits child marriage. Okay, ये तो ये difficult है to see the change which is authorizing the bride herself. Okay, bride herself को participate करना है in marriage registration after the age of 18 as one that permits child marriage. Okay, जो child marriage को permit करता है, तो इस transition को देखने के लिए वो difficult होगा. Okay, so this is what is the first part. ये पहला part है. सर मेरे से ग्रामर तो आती है लेकिन वोकेबलरी याद नहीं हो रहा है, इसी कारण मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहा हूँ. तो आई हैव टू टेल यू वन थिंग, सौरभ, सौरभ जी, कि यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग, आपको पढ़ते ही रहना चाहिए. रीडिंग इज द फाउंडेशन फॉर योर इंग्लिश सेक्शन. तो अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो यू विल नॉट कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स. अगर आप नए वर्ड्स नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका वोकेबलरी कैसे एनहेंस होगा. So you have to keep on reading. Please do not leave reading in between. थोड़ा सा स्ट्रगल है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे नए वर्ड्स, उनका मीनिंग, उनका ऑपोजिट, आपका वोकेबलरी अच्छा हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट गाइस. ये पहला पार्ट है इस एडिटोरियल का. इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? ये क्लियर है सब लोगों को? चलो, ग्रेट 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 ग्रेट. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. ओके, लेट्स सी द सेकंड पार्ट. Hey Suraj, good morning. Welcome to this class. Kavya, good morning to you also and welcome to the session. Okay. Now under the law, okay, under the law मतलब कौन से लॉ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिजेस एक्ट. Under the law, child marriages are not void, okay, are not void but are voidable. Okay, not void but are voidable. Now void और voidable, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये लीगल टर्म्स है गाइस. दीज आर टू लीगल टर्म्स. void का मतलब होता है शुरू से ही नल एंड void है वो. ओके, हमने ग्रेजुएशन में अगर आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा है तो which means null and void. Okay, आपने you must have gone through this phrase called null and void. मतलब शुरू से ही वो invalid है. और voidable का मतलब क्या है? अल्टीमेटली आगे जाके वो इनवैलिड हो सकता है. ओके, दिस इज द, यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स. काइंड ऑफ इनवैलिड, नॉट काइंड ऑफ इनवैलिड आस्था. void का मतलब शुरू से ही इट इज एब्सोल्युटली इनवैलिड. ओके, इनवैलिड. बट voidable का मतलब होता है गोइंग अहेड इट कैन बिकम इनवैलिड. ओके, वो इनवैलिड हो सकता है.
ओके, सो अंडर द लॉ, मतलब राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर हम लोग देखते हैं, चाइल्ड मैरिजेस वॉइड नहीं है, बट दे आर वॉइडेबल। ओके, वो वॉइडेबल है एट द इंस्टेंस। अब ये voidable कब हो सकता है? when can it become voidable? at the instance of one of the parties। okay, दोनों में से। अब parties कौन होते हैं मैरिज में? there is a bride, there is a groom। okay, at the instance of one of the parties who may approach the court for nullifying the marriage within 2 years of attaining majority। okay, 2 साल के अंदर, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी अगर हो गया है और उन्होंने अगर 2 साल के अंदर दे हैव अप्रोच द कोर्ट दैट आई डोंट वांट टू बी इन दिस मैरिज। ओके, मुझे मैरिज में नहीं रहना है, या फिर आई वाज नॉट ऑफ अ लीगल एज व्हेन आई गॉट मैरिड, तब द कोर्ट कैन अल्टीमेटली नलिफाई द मैरिज। ओके, सो इट इज अ वॉइडेबल इंस्टेंस, इट्स नॉट अ वॉइड थिंग। ओके, पहले से इनवैलिड नहीं है, आगे जाकर वो इनवैलिड हो सकता है। ओके, जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ऐसा आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। ओके, so, attaining majority, registering, okay, registering such a marriage may help establish the legal rights of the underage parties। okay, ये जो notion है, okay, registering such a marriage may help establish the legal right of the underage parties and those of any children born। okay, अब ultimately अगर marriage register होता है तो ही द अंडर एज पार्टी हु वाज मैरिड, ओके, जिनका मैरिज किया गया था, तो ही दे कैन एस्टेब्लिश अ लीगल राइट फॉर द अंडर एज पार्टी एंड दोज एनी चिल्ड्रन बॉर्न। ओके, वो जो अंडर एज पार्टीज है उनको कोई भी चिल्ड्रन अगर बॉर्न हुआ है एंड डेटर। ओके, डेटर, डेटर का मतलब होता है डिस्करेज बाय डूइंग समथिंग और बाय इंस्टिलिंग डाउट। ओके, एक डेटर वाला फीलिंग होता है। समटाइम्स पीपल इन आवर लाइव्स दे डिस्करेज अस। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, टिसनेट फर्स्ट अटेम्प्ट में टिसनेट हो ही नहीं सकता, यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन कैसे क्रैक कर सकता है, तू तो ये कर ही नहीं सकता, तू तो 10-10 बजे तक सोते रहता है, यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जाम। सो दे इंस्टिल सम सेंस ऑफ डाउट इन योर माइंड, हाउएवर विच इज नॉट ट्रू। ओके, जैसे आप लोगों ने मुझे पूछा था, किसी आई स्टिल रिमेम्बर कि किसी ने मुझे पूछा था कि सर एवरेज स्टूडेंट टेस्टनेट क्रैक कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अगर डेडिकेशन के साथ, अगर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। यूपीएससी ऑल्सो वी हैव सीन, आज ही आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज इन द मॉर्निंग टुडे दैट अ स्टूडेंट फ्रॉम बिहार बाय सेल्फ स्टडी, ओके, पूरी तरह से सेल्फ स्टडी करके अपने आप से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिक्योर्ड एआईआर 10th रैंक। ओके, देखो, तो ऐसे there are so many people who will instill doubt, they will deter you from your goals or they will deter you from your aim। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। so in this case any children who are born, okay, any children who are born and they are deterred any attempt to deny the marriage later, okay, जिनको अपना marriage deny करना है आगे, it may even help, okay, it may even help prosecuting of those solemnizing। okay, solemnizing मतलब क्या? duly perform a ceremony। okay, बहुत सारे religion में unless and until a marriage ceremony is not solemnized, अगर marriage को solemnize नहीं करते हैं तो फिर वो marriage valid नहीं होता है, it's not valid। so it helps the prosecution also to get hold of these people who have solemnized an underage marriage। okay, underage parties का marriage उन्होंने solemnize किया है and implement previous related to maintenance and residence of the girl whose marriage is invalidated later। okay, मेंटेनेंस के रिलेटेड और रेसिडेंस के रिलेटेड के जो प्रोविजंस है अंडर द वेरियस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किया जा सकता है towards the girl whose marriage was invalidated later। okay, what is nullifying? uh, uh, शहना पटेल, nullifying का मतलब होता है जीरो, कम डाउन टू जीरो।
मतलब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, वो चीज कभी हुई ही नहीं है, उसे नलीफाई कहते हैं. ओके, नलीफाई, इट्स एब्सोल्युटली वॉश इट ऑफ. ओके, so nothing prevents the marriage registrar from alerting the child marriage prohibition officer after registering such marriage. Okay, तो अगर ऐसा केस रजिस्ट्रार के सामने आता है where an underage marriage is to be registered, he can immediately alert the child marriage prohibition officer, and then the officer can take necessary actions ahead. One must note that there was never any specific prohibition on registering child marriages. Okay, child marriages के related prohibition था. Okay, कि child marriage को practice मत करो, but there was no provision related registering of child marriages. ऐसा कुछ provision नहीं था. Even though the Supreme Court observed that even though registration itself could not be a proof of a valid marriage as such, it would have great evidentiary value in the matters of custody of children. Okay, Supreme Court ने भी ये observe किया था कि registration itself, सिर्फ और सिर्फ registration itself is not a proof of a valid marriage as such. It would have great evidentiary value in the matters of कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन. ओके, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एविडेंटरी वैल्यू. राइट ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न from the wedlock of two person whose marriage is registered and the age of the party to the marriage. Okay, इस लाइन को फिर एक बार समझो guys. Okay, custody of the children and right of the children born, मतलब पेरेंट्स के लिए भी और चिल्ड्रन के लिए भी, चिल्ड्रन हु आर बोर्न टू द वेडलॉक. ओके, वेडलॉक मतलब जिनका शादी हुआ है, ऑफ द टू पार्टीज और टू पर्सन हुज मैरिज इज रजिस्टर्ड एंड द एज ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज, मतलब जो मैरिज था और जिस समय पर मैरिज हुआ था उस समय पर पार्टीज का जो एज था उसके लिए ग्रेट एविडेंटरी वैल्यू हो जाता अगर रजिस्ट्रेशन itself was a sole proof of a valid marriage. Okay, as a follow-up to this controversy, Parliament ought to consider the Law Commission's recommendation to amend the Prohibition of Child Marriage Act 2006. Now, this is another law, guys. Okay, this is another law you should be focusing on. Child marriage related कौन सा एक्ट है पार्लियामेंट का? That is the Prohibition of the Child Marriage Act of 2006 to make child marriage below 16 years void. पार्लियामेंट ने भी ये कंट्रोवर्सी में फिर पार्लियामेंट ने भी क्या डिसाइड किया, हमें भी चेंजेस करने होंगे अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कि जितने भी चाइल्ड मैरिजेस होंगे which are below 16 years old will be void. Okay, वो पूरी तरह से void ही होंगे. And those solemnized when either party was between 16 and 18 will be voidable. एक तो 16 साल की कम उम्र के अगर जितने भी शादियां हैं वो पूरी तरह से void हो जाएंगी और दूसरा वाला जो है कि 16 और 18 साल की उम्र में जो शादियां हुई है वो voidable हो जाएगी. ओके, मतलब they can be invalid coming in the future. Okay, this is what is the entire editorial, guys. समझ आया सब लोगों को? Everybody understood? समझा? What is the controversy? What is the controversy? समझ आया पूरा controversy क्या है? Okay, चलो. So these are the words that we came across. Okay, these are the words that we came across. Legitimize is make legitimate या फिर approve और लीगल, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, अप्रूव और लीगल. वी कैन से दिस ऑल्सो. डेटर is discouraged by doing something, by instilling doubt or fear about something. And last one is solemnize, duly perform a
ceremony. Okay, duly perform a ceremony. So generally who carries out the rituals in a marriage, okay, in all religions, those are the solemnizers. Those are the one who solemnizes the marriage. Okay, chalo. uh, let's take a look on the uh, questions. Questions की तरफ questions देखे. Should we check out the questions, guys? Okay, चलो. सबसे पहला क्वेश्चन. Synonym of offend. Synonym of offend. Offend का synonym क्या होगा? Synonym of offend. Vaibhavi said A. Shruti A. Adrika A. Shweta saying good morning. Welcome to this session, Shweta. Suraj A. Sumant A. Asha A. Radhika Sharma, good morning. Welcome to this session. She also said it's A. Chehna ने कहा approve. The correct answer to this question is A, guys. Okay, A. Annoy is the correct answer. Next, synonym of subside. Synonym of subside. Subside का synonym क्या होगा, guys? Come on. Subside. Synonym of subside. श्रुति ने कहा ए. अद्रिका सी. सूरज सी. अमन ई. सायंतिका सी. चहना. श्वेता. सुमन. काव्या. मयांक. सोहिनी. राधिका. Everybody said it's C. Subside is Prachi. Good morning. Welcome to the session. Is diminish. Okay, subside is diminish. It is to come down. Subside का मतलब होता है नीचे आकर किसी एक चीज में सेटल हो जाना. That is what is subside. Okay, उसे subside कहते हैं. Next, meaning of handle with kids glow. Shivaji Patil, good morning. Welcome to the session. Meaning of handle with kids glow. Meaning of handle with kids glow. Correct, correct, guys. Vaibhavi, Mayank, Shruti, Sumant, Kavya, Santika, Asha, Adrika, Prachi, Sohini, Radhika, Shivaji, Aman, Suraj, Shweta, everybody. Correct answer, guys. To treat someone with extreme care. Okay. Uh, everybody who owns an apple tends to handle it with kids' gloves. By the way, have you guys heard the report that an average Indian who wants an iPhone 13 Max Pro Max has to work for 700 hours? Okay, 700 hours के लिए काम करना पड़ेगा in order to afford iPhone 13 Pro Max. Next, word which means one who is, okay, one who is, of nahi,
One who is easily deceived. Word which means one who is easily deceived. One who is easily deceived. वैभवी ने कहा बी, सूरज said बी, मयंक बी. बिल्कुल अमन, बिल्कुल. प्राची, अद्रिका, सैंतिका, अमन, सोहिनी, सुमंत, राधिका, श्वेता, everybody said it's B, and that is a correct answer, guys. Deligible. Okay, deligible का मतलब होता है capable of being deleted. Okay, deligible means capable of being deleted. Corrigible. Okay, corrigible is particularly means incapable. Okay, incapable of making mistakes. That is what is corrigible. And infallible. Okay, infallible. Sorry, infallible is capable of making incapable of making mistakes. Sorry, guys. Infallible is incapable of making mistakes, and corrigible is capable of being corrected or rectified. Okay, so gullible is the correct answer here. Sir, क्या हम कैट में दो सेक्शन स्ट्रॉन्ग करके अचीव कर सकते हैं? Nandini, that seems to be a little difficult because percentile is overall score. वो overall score पर calculate होता है. Last question, guys. Last question. Synonym for parsimony. Synonym for parsimony. Last question, guys. Last question. Synonym for parsimony. ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का. Synonym of parsimony. Adrika said it's B. Shruti said it's B. Sohini said it's B. Mayank said it's B. Radhika B. Santika A. Kavya B. Aman B. And that is a correct answer, guys. Correct answer is frugality. Okay, frugality. That means quality of being economic. Quality of being economic. Minimalistic जिसे कहते हैं minimalistic. That is frugality. Okay. चलो. That is all from my side for this class, guys. मेरी तरफ से आज इतना ही. Any doubt in this session? किसी को इस सेशन में डाउट है? Any doubts in this session, guys? No 1 p.m. class. All the special classes will resume from 1st of October now. सारे special classes 1st October से resume होंगे. चलो. So before we part ways, guys, wanted to tell you about the special class features. Uh, just like YouTube, you can have live interactive classes from top educators of this country.
On the Unacademy learning platform, you will have polls for the learners. You also have raise a hand. You will never miss a class because you will now be notified for all the sessions. Upcoming courses, upcoming recommendations are just for you. You can also download the lecture notes from the application itself with and without annotations. And the best thing is you can watch your sessions anytime, anywhere from any of your devices. किसी भी devices से आप अपने sessions को देख सकते हो. Okay. YT session is there. 7 बजे YouTube का session होगा. So guys, you guys can join me for my special class from Monday to Friday at 5 p.m. For the TISNET 2022 daily GK update and quiz class. Mind you guys, special classes are all free classes on Unacademy learning application. You don't have to subscribe to anything. आपको बस Unacademy का application download करना है. And you have to use this code while registering, that is RUSHI Rushi, ताकि मेरे जितने भी free sessions है guys, all my free sessions you can watch it unlimitedly. आप उसे unlimitedly देख सकते हो on the Unacademy learning platform. Also guys, check out the Cat Iconic one-on-one live mentorship program. You can speak with the mentor directly, you can clear a doubt, you can discuss concepts, you can discuss exam strategy, you can build a customized study plan, book slot as per your convenience on the Unacademy uh, Iconic subscription. Go for the subscription, guys. The 1 year subscription plan for Iconic goes for 39,500 rupees, and all the people preparing for CAT 2022, you guys should go for the 2 year subscription plan that goes for 59,999 for Iconic. Similarly, plus के भी बहुत सारे subscriptions available है guys, 1 year 1 month से लेकर 24 months तक. So you can go for the plus subscription according to your requirement. Just don't forget to use my educator code, that is RUSHI Rushi. That will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. Thank you all for joining me for this session. You guys were absolutely amazing today. I will see you at 7 p.m. for the TISNET Dynamic GK test series. Do not forget, today's topic is awards and recognition. Thank you once again, guys. Let's crack it. Have a good day ahead.